because the future is related with nuclear. The future is related with nuclear power plants. Whole world is facing the scarcity of the energy, and that's why we need energy. And for that energy, we have to have the technology and concepts of nuclear chemistry. And that's why, in that sense, this chapter is very important, and hope it will give a future source of energy to us. Till that, what we have discussed here in the chapter, we have seen the structure of atom. We have made the analogy of structure of atom with the solar system. We have seen what is nuclide. We have seen the classification of nuclides based on the proton, neutron, electrons. We have also seen the classification of nuclides based on the stability. We have also seen stable and unstable nuclide. Also seen what are the factors responsible for the stability. We have seen that the stability depends upon number of factors. So that is nothing but the proton to neutron ratio, then odd even number of protons, then magic numbers, then nuclear potential, binding energy per nucleon. So these are the concepts we have seen initially here in the chapter in first half. In second half, we have seen that is nothing but you can say radioactivity. What is the concept of radioactivity? What is decay? What is rate of decay? What is rate law? Then what is integrated rate law? Also, we have some half-life period for this radioactive element. That is also what we have seen in the middle part of the chapter. And then in last lecture, we have discussed there is modes of decay. Radioactivity is the process in which nuclide emits some nuclear particles and energy is emitted, and that phenomena is called radioactivity. There are 118 elements in the periodic table. Out of that, few elements are there which are radioactive elements, say radium, uranium, thorium, plutonium. These are the elements which are naturally radioactive elements. So suppose we have the radioactive element radium. That radium emits radiations from the nucleus of an atom, as well as some nuclear particles are emitted. And this is a very spontaneous process, very continuous process. That doesn't need any external influence. Already we are very clear. Here in this nuclear radiochemistry, we are dealing with the nucleus of an atom. We are not concerned with the outer part of an atom. So we are very clear with this one. So इस chapter में बाहर का part discuss करना ही नहीं है. हमें जो discuss करना है, that is nucleus of an atom. And this radioactivity is the phenomena which is related with nucleus of an atom. So in this radioactivity, radiations are emitted from the nucleus of an atom. Nuclear particles are emitted from the nucleus of an atom. And that is nothing but the radioactivity, which is very spontaneous and very continuous process. Still, that elements get converted into unstable nuclei, or that is you can say layer-like elements. So that is what we have seen. Then also we have seen this radioactivity. There are modes of decay. Modes of decay. Henry Becquerel is the scientist who put forth the concepts of this radioactivity and this spontaneous radioactivity as well. And Marie Curie is the scientist who first isolated the radium element, which is a radioactive element. So these are the two scientists who has very great contribution here in the nuclear and radiochemistry. Also in last lecture we have seen in this radioactivity, modes of decay are there. Modes of decay are there. And what are the modes of decay? We have seen that is you can say alpha radiations, alpha rays, the alpha particles. दूसरा देखा हमने beta particles या beta rays. तीसरा देखा हमने gamma rays or gamma particles. Got it? So suppose X is the element which has atomic number Z and mass number A. If it emits alpha radiation, then X के बदले यहाँ पे Y element तैयार होता है, and that has Z minus 2, and here A minus 4, and here helium particle is emitted, which is nothing but the alpha ray. Okay, so this is alpha ray. Is there any difficult to anyone? Someone is there? Okay, take it. Don't unmute your sound, please. If you have any difficult doubt, just you can unmute and you can have a talk with me. So this is the nuclide. X is the nuclide whose atomic number is Z and mass number is A. If it emits helium particle is nothing but the alpha radiations. At that time, new element is formed whose atomic number decreases. Here, this X is a nuclide whose atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. And this is what we get here. Okay, so ये हम लोग को यहाँ पे मिलता है. Yogita, please mute your sound. Yogita, please mute your sound. Okay, thank you. So this is what we can say alpha radiations, and this is what we can say beta radiations or beta rays.
So whenever this nuclide emits the beta radiations, at that time, see what happens here. This is, you can say X is the element, Z and A mass number. It emits some beta radiations. At that time, this new element is formed over here, Y element, whose atomic number increases by 1. Mass number remains the same. And here, 1 electron is emitted. This is electron. Electron particle is nothing but the beta radiations. Beta radiations is nothing but the electron particles. So this is the emission of beta radiations. And when we talk about the gamma radiations. So these two are the particles. These two are the particles. Alpha radiations and beta radiations. Alpha particles and beta particles are the particles. But gamma is not a particle. It is electromagnetic radiations. Keep it in mind that these beta and alpha are the particles, but gamma is an electromagnetic radiation. There is a big difference between the particle and electromagnetic radiation. So this is the gamma radiations when this X is the element whose mass number, atomic number is Z, mass number is A, emits the gamma particle. At that time, here Y element is formed, no doubt at all. Here, suppose helium particle is emitted, Z minus 2, A minus 4, and this helium particle is emitted 2, 4. At that time, this gamma is emitted. So when gamma particle is emitted, at that time there is no change in atomic number or mass number of this nuclide. But as well, this gamma is not a primary effect. Gamma is always a secondary effect. That is what we have seen in last lecture, no doubt at all. See, this is the nuclide X, which is the radioactive element. It emits alpha radiations or helium particles, and then this gamma radiations are emitted. It never happens that this element has emitted gamma directly. Gamma particles या gamma radiation, gamma particles तो है नहीं, gamma radiations primary effect नहीं, immediate कोई element gamma radiations emit नहीं करता है. It is always a secondary effect. पहले या तो न्यूट्रॉन बाहर आएगा, या तो हीलियम बाहर आएगा, या बीटा पार्टिकल बाहर आएगा, पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, उसके बाद ही gamma radiations आ सकते हैं. तो gamma is always a secondary effect. Means पहले अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएंगे या फिर बीटा पार्टिकल इमिट हो जाएंगे, उसके बाद ही gamma particles emit हो सकते हैं. Gamma particle directly कोई element emit नहीं करता है. So that's why it is called as these are the primary effects, but gamma is always a secondary effect because ये हमेशा बाद में आ सकता है, side effect के जैसा बाद में आता है. That's why this works here. So whenever gamma is emitted, actually there is no change in atomic number and mass number. किसी भी elements के atomic number mass number में gamma के कारण change नहीं होता. हाँ, here देखिए अल्फा पार्टिकल इमिट किया गया है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और मास नंबर 4 से कम हो गया बिकॉज़ ऑफ अल्फा पार्टिकल, नॉट बिकॉज़ ऑफ गैमा. समझ रहे हैं आप लोग? तो गैमा पार्टिकल जब इमिट किया जाएगा देयर वोंट बी एनी चेंज इन दिस मास नंबर और दिस एटॉमिक नंबर. सो दिस इज व्हाट आई एम. ये जो है दिस इज मोड्स ऑफ डीके. कोई भी न्यूक्लियस जब रेडिएशंस इमिट करता है, न्यूक्लियर पार्टिकल इमिट्स करता है, तो इस फॉर्मेट में इमिट करता है एंड दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस. जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम कई सारे रिएक्शन लिखते हैं, वो रिएक्शन लिखने का तरीका और ये रिएक्शन लिखने का तरीका अलग है. सो all these are also called as, you can see, nuclear reactions. How the nuclear, बहुत सारे तरीके, but ये लिखने का तरीका है. तो nuclear reactions के अंदर there is a atomic number, there is a mass number which changes, either increases, decreases because of any of the particle, and that has to be written in this manner only. तो एरो के पहले जो भी हमारा रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड था वो फिर बाद में तैयार होने वाला न्यूक्लाइड, फिर इमिटेड पार्टिकल्स, रेडिएशंस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है. मास नंबर और एटॉमिक नंबर प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है, बैलेंस होने पड़ता है. ये जो एरो किस तरफ है, सारे का एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इनका मास नंबर मैच होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर मैच होना चाहिए. दिस इज लाइक टू इक्वल टू. ये जो एरो है इक्वल टू के जैसे होता है. दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑन राइट हैंड साइड. Mass number on left hand side must be equal to mass number on right hand side. So this happens, and that's why this is the way how we can write the nuclear reactions. All are clear with this? Now, thing is that we were discussing modes of decay. Modes of decay. Decay मतलब disintegrate. Radiations emit होने की प्रोसेस है, उसे हम लोग decay कहते हैं. Okay. जैसे हमारे घर के अंदर फूड होता है, फूड डिस्ट्रॉय होता है, स्पॉइल होता है ना, फूड खराब होता है ना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन या यू कैन से डिस्ट्रॉय होता है. उसी तरीके से कोई भी न्यूक्लाइड जब रेडिएशन इमिट करता है उसे डीके कहा जाता है. एंड दिस इज द डीके एंड हाउ वी कैन राइट दिस डीके रिएक्शंस लाइक दिस वन. तो इस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए आप लोग कि कोई भी न्यूक्लाइड जब अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो इस तरीके से उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होता है. कोई भी न्यूक्लाइड जब इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो इस तरीके से चेंज होता है. गैमा रेडिएशन इमिट करता है तो उसके अंदर भी इस तरीके से चेंज होता है. देयर इज नो चेंज एट ऑल इन गैमा. दैट इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट वी कैन से. और दिस इज आल्सो अ वे हाउ वी कैन राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट द न्यूक्लियर reactions जो ऑलरेडी हमने शुरू किया था, न्यूक्लियर रिएक्शंस. सो लेट्स मूव. sorry
ओके, सो नाउ वी आर हियर विद न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो अभी देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर कौन से न्यूक्लियर रिएक्शंस आते हैं। नंबर 1 ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन। दूसरा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तीसरा न्यूक्लियर फिशन, and fourth nuclear fusion. So these are the main four types of nuclear reactions. Be clear, there are main four types of nuclear reactions. Number 1 is nothing but the transmutation process. Number 2 is nothing but the artificial radioactivity. Number next is nothing but you can say nuclear fission, and number 4 is nothing but the nuclear fusion. So these are what we can say nuclear reactions. So let's discuss one by one. न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी हैव टू डिस्कस न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहला था ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। अभी ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच any of the nuclides get converted to another nuclide. One nuclide gets converted to another nuclide. This phenomena, this process is called as a transmutation process. हमने डीके के मोड ऑफ डीके के इसमें कई सारे एग्जांपल हमने लिखे। यूरेनियम न्यूक्लाइड ब्रेकडाउन होता है, थोरियम ब्रेकडाउन होता है, प्लूटोनियम ब्रेकडाउन होता है, ये सारे एलिमेंट देखे हमने। कोई भी एक न्यूक्लाइड दूसरे न्यूक्लाइड में जब कन्वर्ट होता है, दैट मे बी स्टेबल और दैट मे बी अनस्टेबल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है एक टाइप का न्यूक्लियस दूसरे टाइप्स के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, चाहे वो स्टेबल हो चाहे वो अनस्टेबल हो, नया तैयार होने वाला। एंड उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? So transmutation is one of the type of nuclear reaction. Unless and until there occurs a nuclear reaction, how one nuclide gets converted to another nuclide? That is a big question. है ना? मतलब एक न्यूक्लाइड दूसरे न्यूक्लाइड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? हो ही नहीं सकता। Unless and until there is a nuclear reaction. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है by emitting radiations, by emitting nuclear particles like that. This happens, and this phenomena, this process is called a transmutation process. तो ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस में वन न्यूक्लाइड that gets converted to another nuclide that may be stable or that may be unstable. This phenomena is called a transmutation process. जितने सारे एग्जांपल है, हम लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। हमने यूरेनियम डीके लिखा है, हमने थोरियम डीके लिखा है, हमने प्लूटोनियम डीके लिखा है, हमने कल परसों हमने जो एग्जांपल लिए थे मोड्स ऑफ डीके में, उस कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। आगे भी काफी सारे एग्जांपल आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे आएंगे। नेक्स्ट जो आता है वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन व्हिच one nuclide which is a stable that is converting to unstable nuclide, because one stable nuclide is converting to unstable nuclide, and that phenomenon is called artificial radioactivity. Let's have the example for this one. That is what we can say here. Artificial radioactivity. Okay? There is an example called as the boron, whose atomic number is 5 and mass number is 10. This is bombarded with helium particle, that is alpha particles 2 and 4. So whenever it is bombarded, at that time one neutron is emitted. One neutron is emitted. Neutron has atomic number 0, mass number 1. अब देखिए, we are writing the nuclear reactions. Nuclear reaction कैसे लिखी जाती है अभी समझेगा आपको। This is the boron नाम का एलिमेंट है, न्यूक्लाइड है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 10 है, और उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स, हेलियम मतलब अल्फा पार्टिकल्स, वहां पे बताया हमने, हेलियम मतलब अल्फा पार्टिकल्स, उनका बम्बार्डमेंट किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, मतलब उनको स्ट्राइक किया जाता है। बेरियम के ऊपर इनका बम्बार्डमेंट किया जाता है, मारा जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, रेडिएशन। सो जैसे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे, न्यूट्रॉन इमिट होता है। न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। सी न्यूट्रॉन इमिट होता है इस तरीके से, जिसका एटॉमिक नंबर 0 है, मास नंबर 1 है। दिस इज न्यूट्रॉन पार्टिकल। न्यूट्रॉन पार्टिकल इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 0 है, बिकॉज उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और उसका मास नंबर 1 होता है। तो दिस इज द न्यूट्रॉन पार्टिकल। अभी देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए इसका मास नंबर 10 है, ये 10 और 4 कितना होगा 14, 14 में से एक चला गया, तो यहाँ पे बचता है आपका 30। ओके, मास नंबर 13 + 1 14 और 10 + 4 14, तो ये 14 हो गया। नाउ इसके आते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर की 5 + 7, 5 + 2 7, और यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 7 + 0 is 7. So 5 + 2 is 7, 7 + 0 is 7. Atomic number is balanced, mass number is balanced. 7 किसका एटॉमिक नंबर है? This is nothing but the nitrogen. ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। So क्लियर नहीं है? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, जिसका मास नंबर 13 है। ये नाइट्रोजन यहाँ पे तैयार होता है, और ये जो नाइट्रोजन है, so this is the element which is a stable element. This is element which is unstable element. Unstable element. अभी अनस्टेबल एलिमेंट देखिएगा, नाइट्रोजन 7,
13 emits some radiations like positron, E plus 1, 0. And this particle is nothing but the positron. Positron particles. देखिए, there are nuclear कई सारे particles होते हैं, जिसमें alpha particle होता है, beta particle होता है, neutron होता है, positron होता है. अभी positron और इस इलेक्ट्रॉन में देखिए, इसमें और इसमें एक फर्क है. This is electron particle, जिसका atomic number -1 है और ऊपर 0 है. इसका atomic number +1 है और यहाँ पे 0 है. मतलब atomic number 1 है, this is called as positron. इसका mass 0 है, लेकिन atomic number 1 है. मतलब इसके ऊपर positive charge है, इसके ऊपर negative charge है. So that's why this is called as positron. This is called as beta particle. अभी ये जब positron emit होता है, तो ये 1 से कम हो जाएगा. ये 7 1 से कम हो जाएगा. This will become 6, क्योंकि 6 + 1 is 7. 7 हो गया. और ये 13 या 0, मतलब ये 13 ही रहेगा. This is nothing but the carbon, and this is radioactive. Radioactive. So this is one of the isotope of the carbon which is radioactive, carbon. So अब देखिए, this is nothing but artificial radioactivity example. So इसके अंदर देखिएगा कि this is the boron which is a stable nuclide. Boron naturally काफी stable nuclide है. This boron is bombarded with helium particles, मतलब अल्फा रेडिएशन उसके ऊपर बम्बार्ड किए गए. अल्फा रेडिएशन बम्बार्ड किए, जैसे हम लोग टॉर्च से लाइट मारते हैं या लेजर रेज देखते हैं. आप लोग आजकल मेडिकल साइंसेस में लेजर रेज का ऑपरेशन भी आ चुका है ना, लेजर रेज से ऑपरेशन करते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा रेडिएशंस का मारा किया जाता है, इसके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं. बम्बार्ड मतलब मारा करना, टॉर्च मारते हैं ना, इस तरीके से यहाँ रेडिएशंस इसके ऊपर बीम मारा जाता है. तो ये इसके ऊपर बम्बार्ड करने के बाद it gets converted into नाइट्रोजन 13, जो अनस्टेबल है. नाइट्रोजन 13 अनस्टेबल है. नाइट्रोजन 13 पॉजिट्रॉन इमिट करने के बाद कार्बन 13 में कन्वर्ट होता है, एंड दिस कार्बन 13 इज नथिंग बट द रेडियोएक्टिव एलिमेंट. सो आप देखिएगा, हमारा स्टेबल न्यूक्लियाइड था बोरॉन, उसको हमने बम्बार्ड करने के बाद रेडियोएक्टिव कार्बन 13 में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज बाय वेरी आर्टिफिशियल मींस, कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो इसका मतलब देखिए, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होता है. आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी ये है जिसमें स्टेबल न्यूक्लाइड रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड में कन्वर्ट किया जाता है, and this phenomenon is called as artificial radioactivity. This process is also called as transmutation. This process is also called as transmutation process. Transmutation मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लाइड दूसरे न्यूक्लाइड में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं. बट ये जो न्यूक्लाइड स्टेबल है, ये न्यूक्लाइड रेडियोएक्टिव है और ये हमने आर्टिफिशियल किया है, that's why it is also called as artificial radioactivity. artificial radioactivity. ट्रांसम्यूटेशन में क्या होगा, नया होने वाला एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है. दो यहाँ पे हमने उसे अनस्टेबल में तैयार किया. अनस्टेबल मतलब रेडियोएक्टिव, अनस्टेबल में कन्वर्ट किया है. दैट्स व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव. हम ऐसा कह सकते हैं, हर ट्रांसम्यूटेशन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी नहीं हो सकता, बट हर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी ट्रांसम्यूटेशन हो सकता है. हर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी ट्रांसम्यूटेशन हो सकती है, बट हर ट्रांसम्यूटेशन आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी नहीं हो सकता. इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लाइड स्टेबल और अनस्टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो हम जब ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस में, so this is X nucleide that can be converted into stable or that can be converted into unstable nuclide. So be clear here. So transmutation में this is converted into stable or unstable. Artificial में this nuclide is converted into unstable. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जो हमने यहाँ पे करके दिखाया. So hope everyone is getting it. Transmutation is a process in which one nuclide is converted to another nuclide. That may be stable, that may be unstable. Or artificial radioactivity is this, in which one nuclide is converted to necessarily radioactive element, a radioactive nuclide. This phenomenon is called as artificial radioactivity. Also, everyone got it? What is artificial radioactivity? Yeah. So this is the second type of reaction. Next is the nuclear fission and nuclear fusion. These are two again very important reactions what we have to discuss over here. So let's move to next this now. Nuclear fission and nuclear fusion. These are very important reactions. Without this, it's very simply difficult for us to survive on this earth, because we are existing because of nuclear fission and fusion reactions. So let's move to this. What is nuclear fission? Nuclear fission is the process in which heavy nuclide is broken down into two or more lighter nuclides. Let's have one example. That is, you can see uranium-235. This is uranium. Uranium 235 92 is broken into barium plus krypton. That is, you can say 56, 36, 141 side. There is 142 and here 91, and plus
3 neutrons are emitted. 3 neutrons are emitted. Plus, amazing. This is the reaction. इस रिएक्शन में देखिएगा, this is, you can say, uranium 235, which is a naturally radioactive element, nuclide. These uranium 235 broke down into barium and krypton. These are the two elements in which it's broken down, whose atomic number is this, mass number is this, atomic number, mass numbers, and 3 neutrons are emitted in this process. 3 neutrons, 2 to 3 neutrons are emitted in this process. जरूरी नहीं कि 3 ही हो. This phenomenon में light, heavy nuclide, heavy मतलब बड़ा nuclide broken into two lighter comparable nuclides. बड़ा nuclide दो comparable masses में divide होता है, breakdown होता है. This phenomenon is called as nuclear fission. This is nothing but the nuclear fission. ये example nuclear fission का है. मतलब heavy nuclide break down into two comparable particles or two compatible masses, and this phenomenon is called as nuclear fission. Hope everyone getting it? What is nuclear fission process? Heavy nuclide breakdowns into two comparable nuclides. This may be stable, may be unstable. That doesn't matter. But heavy nucleus, दो छोटे nucleus में breakdown होता है और 2 to 3 neutrons are emitted in this process. This phenomenon is called as nuclear fission. All of you getting it? So nuclear fission is the reaction in which heavy nuclide broke down into two comparable particles, two comparable nuclides, and 2 to 3 neutrons are emitted. तो बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे दो न्यूक्लाइड में कंपेरेबल इसमें ब्रेकडाउन होता है और 2 to 3 न्यूट्रॉन जिस प्रोसेस में इमिट होते हैं, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है. एंड दिस इज आल्सो अकम्पनीड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो इमिट होता है, एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन से न्यूक्लियर फिशन. 1 gram uranium produces 24,000 kilowatt of energy per hour. इतना ये होता है. और एक सिंगल यूरेनियम मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल एटम यू कैन से सिंगल एटम्स ब्रोक्स टू प्रोड्यूस 400 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इतना होता है. अभी देखिए इसका अंदाजा हमें नहीं आएगा बिकॉज ये सारे फिगर्स हम नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है फिगर्स नहीं जानते, उसको दूसरी भाषा में हम लोग मैं समझाऊंगा आपको कि कितना होता है. The reason behind that, the applications of nuclear chemistry are here only. These two reactions are very important. These are naturally occurring and also you can say artificially prepared. हम अच्छी तरह जानते हैं. This is the reaction. Nuclear fission and fusion reactions are going on the surface of the sun. हम जिस सूरज की बात करते हैं, हम सन की बात करते हैं, जिसके कारण हमें लाइट मिलता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है. हम बचपन से पढ़ते आए. All plants have the photosynthesis in presence of sunlight. They absorb carbon dioxide, sunlight, and produces the food. तो प्लांट जो फूड तैयार करते हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एवरीथिंग. एंड वो सनलाइट जो सन हमें देता है, दैट बिकॉज़ ऑफ फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन. मतलब सूरज के सरफेस के ऊपर, सन के सरफेस के ऊपर फिशन एंड फ्यूजन दोनों रिएक्शन कंटिन्यूअसली नेचुरली होते रहते हैं, और जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी कम्स टू अर्थ. अर्थ के ऊपर वही एनर्जी हमारे पास आ जाता है. दैट इज व्हाट यू कैन से न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. So when we are talking about nuclear fission, this is the process in which heavy nuclides break down into two comparable particles or nuclides, and 2 to 3 particles of neutrons are emitted, as well as large amount of energy is emitted in this process. Amount of energy is emitted in this process. कितना emit किया जाता है? अगर हम लोग एक एटम की बात करते हैं, एक न्यूक्लाइड की बात करते हैं, यूरेनियम का एक न्यूक्लाइड अगर ब्रेक डाउन होता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होती है. अभी एक एटम की बात छोड़ते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 ग्राम की बात करते हैं. 1 ग्राम यूरेनियम कितना होता है? हम दुकान में जाते हैं, सोना लेने के लिए जाते हैं, तभी भी 1 तोला लेके